Welcome to the lecture. Now we are exploring very important thing in embedded system, and what we will explore today outline is we will explore the overview of the character and care in embedded system and crucial role of the care in data handling and size, range, and importance in the embedded application. So now, in this lecture, let's discuss about one of the integer data type that is the char. What is? That is the char. This is any integer data type to store a single character, ASCII code value or 1 byte of signed data value that can be negative and it can be positive. So suppose, for example, we are considering high. I actually it's equivalent to this binary number. Okay. Because the computer only understand the binary number. You already know. So H is considered in binary this one number and H I is considered is equivalent to the this number. So we can say the one char equal to 1 byte and 1 byte equal to 8 bit. So now we are exploring very important thing. So that is name is used as a cat that because the cat type data types are majorly used to store the character. That is ASCII code of the character. So that is why the name is given as a cat. Apart from that, there is no special meaning for that. And it happened to be the smallest integer data type. So you have to remember this point. A char data type variable consume 1 byte of memory, and char happen to the smallest integer data type of 1 byte. There is no other special meaning for the char data type, and it is just another integer data types. So now we are talking about the range of the char data types. So what is the range of char data types? The range of the char data type is the minus 128 to 127. A char data type will be used to store 1 byte of signed data. So, 1 byte of signed data, for example, a temperature value, if it is the negative sometime and it can be the positive sometime. So, it based on the nature, what kind of data we want to store? We want to store the, so it is called a signed data. And so you can use cat data type to store the temperature value. Okay. Unsigned char range is 0 to 255. Any unsigned char data type will be used to store 1 byte of signed data. So now unsigned char, the range is from 0 to 25. Considering one example right now. Okay. The example is like this one. The example, I want to store the current temperature data of CTX in my program. So CTX today's temperature suppose 25 degrees Celsius. I am sure that the X temperature never go below to 0 degree and never go to 40 degrees Celsius. That means the CTX temperature will always be positive value and the maximum value is less than 255. So here we can use the sign char data type to represent the temperature value. Okay. Uh, Now application of char in embedded program. We are considering one value. Uh, Here, the CTX temperature is a variable of type unsigned char to hold the integer value of 25.
This one is the definition of the variable. And now we are storing the 25 inside the CTX temperature. We are creating a variable CTX temperature, that type of unsigned char, right? And the way now we are focusing on the variable definition and its role in embedded programming. What is the role of the embedded programming and what is the definition? The unsigned char CTX temperature, that is the signed char is the data type and variable name is CTX temperature. Now temperature, that is the initialization. We are initialize the value 25 inside the CTX temperature, right? This one, this is the variable definition. This is the variable initialization. So now move forward. Key point to remember as a embedded programming. So variable definition always include data type followed by the variable name. Before using the variable, you should always define it using the appropriate data type. And you can select the data type according to your program logic and name. Wow. Now we are exploring some format specifier to formatting the data, which kind of data you want to display and store. So that's why we are using the format specifier percentage %d, the integer calling the integer format specifier, and percentage %f calling the float format specifier, and percentage %c is called the character format specifier, and percentage %u is the unsigned format specifier, and percentage %ld is called long int format specifier. एंड थैंक यू फॉर द लेक्चर। तो हमने जो आज जो डिस्कस की है, वो हमने कैर डेटा टाइप को हमने देखा है कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो स्टोर हो सकती है। तो हमें सिंपल एग्जांपल ये है, जैसे कि हमें साइन और अनसाइन में कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी-कभी कि साइन डेटा कैसे लें और अनसाइन कैसे कंसीडर करें। तो आप कभी भी ना रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचना कि वो डेटा नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। सपोज़ हम टेम्परेचर का एग्जांपल लेते थे। तो टेम्परेचर जो है वो अगर किसी सिटी का है और वो हमें पता है कि वो नेगेटिव तो जा नहीं सकता है और वो पॉजिटिव में रहेगा। तो हम किस टाइप का डेटा वहाँ पे डेटा टाइप यूज़ करेंगे टू स्टोरिंग दिस वैल्यू एंड और किस टाइप का, जैसे हमें डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कहीं से हमें दे रखा है कि यहाँ से इतना किलोमीटर हमें चलना है या 100 किलोमीटर चलना है, तो 100 किलोमीटर किस रेंज में आ सकता है। तो जो कैर डेटा टाइप है, उसकी रेंज जो अगर हम साइन में देखें, तो साइन में क्या होती है, साइन में 2 पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव देखो कहाँ से होल्ड कर सकता है, ये कर सकता है -128 टू 127 तक। और अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, तो ये कर सकता है 0 टू 255, मतलब इतने इंटीजर नंबर जितने भी बिटवीन में आएँगे, तो आप इस इंटीजर डेटा टाइप के अंदर उसे स्टोर कर सकते हैं। और फ्लोट की बात भी करें, अगर आप 25.5 को स्टोर करना चाहोगे, तो वो इस डेटा टाइप में नहीं होगा। उसके लिए सेपरेट डेटा टाइप है, उसे हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको रियल वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचना है कि डेटा किस टाइप का है और कैसे हमें स्टोर करना है। तो आगे हम और वीडियो में और चीज़ें भी देखेंगे एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।